Hello dear students, welcome to the video today. Children, we are carrying on with this first chapter economics where we are talking about development. In development, we have talked about the different criterias of development, different goals of development. What is development meaning for an individual? How does it affect the life of an individual? How does it change the pattern of living conditions? Income is not the only goal of any person. There are many other criterias that are used by the people, that are considered important by the people for development. So we have to keep all these points in mind, and considering all these important points, now we are moving towards the next important issue, that is income and other criteria. When we look at individual aspirations, individual goals, what are the important things that an individual requires in the life, we came to know that people think of better income. अच्छा income के लिए वो तब सोचते हैं. They also have goals like security, respect for others, equal treatment, freedom. देखो कितनी सारी चीज़ें. How many things are included in development? Development is not the only income development कि you earning good money, that means you are developed. No, the other criterias are also there. Nation is there, region is there. We are considering average income. Other important attributes for development are also mentioned here. People are thinking of better income, they have goals, security, respect for others. These things, देखो, many times questions is asked कि other than income, what are the things that are considered to be important for development? So security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. So when we are thinking of a nation or a region, we are considering as average income, we are considering as other important attributes for development. अब ये attributes क्या है? What are these things that are considered? So we have taken sample as 3 states, Haryana, Kerala and Bihar. Now what happens here is Haryana, Kerala and Bihar, we are considering the per capita income. Per capita income, yes. The individual income, previous pages may we have already discussed. The per capita income, state net domestic product at current prices, domestic product, net PCN, per capita net state domestic product, current prices 2017-18 का, this is the latest data. That's really important, that's really good कि ये कम this data, please understand, per capita net state domestic product, what they are saying is कि आप पढ़ के फिर कंफ्यूज हो जाओगे what this complicated term means. We can take it to be the per capita income of the state. State में कितना इंसान कमा रहा है, we are talking of that. And we are seeing कि we find that 3 states, हरियाणा में सबसे ज़्यादा per capita income है and lowest is बिहार. ओके, लोएस्ट कैटेगरी में बिहार है. बिहार इज एट द बॉटम. इसका मतलब है कि एवरेज में अ पर्सन इन हरियाणा इज अर्निंग ₹1,80,174 इन 1 ईयर. एक साल में एक बंदा कितना कमा रहा है, दैट इज व्हाट इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड हियर डियर स्टूडेंट्स. तो अगर पर कैपिटा इनकम, इफ यू आर टॉकिंग ऑफ द पर कैपिटा इनकम, इट इज यूज्ड टू मेजर द डेवलपमेंट. हरियाणा तो मोस्ट डेवलप्ड कंसिडर किया ही जाएगा. बिहार इज द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ द 3. अब देखते हैं कि और भी डेटा, देयर आर अदर डेटाज. नाउ चिल्ड्रन, व्हाई दिस इज इम्पॉर्टेंट इज दैट डेटा बेस्ड क्वेश्चंस आर वुड बी आस्क्ड फॉर योर टर्म 1. टर्म 1 में दिस इज इम्पॉर्टेंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द डेटा बेस्ड क्वेश्चंस. Infant mortality rate हरियाणा में देखो. अब now we are considering these categories. Infant mortality rate per 1000 live birth
कितने बच्चे जो हैं 1000 में से? हरियाणा में इट इज 30, केरला में 10 एंड बिहार में 36। अगेन बिहार में सो मेनी किड्स आर डाइंग। अब यहाँ पे what we are finding the difference, just see the difference, how the calculations change. What is the change in the calculation? Kerala mein there are only 10 children dying per 1000. What a good number. Of course it should come to zero, लेकिन practically it's not possible, लेकिन फिर भी 1000 में से अगर 10 बच्चे ही, if mortality rate is only 10, it is a very good number. मतलब कि काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है. दे आर टेकिंग गुड केयर ऑफ द women who are giving birth to the children, and they are managing their affairs very properly. हरियाणा, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आखिर केरला क्या कर रहे हैं. अभी आगे वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट. देन वी आर टॉकिंग अबाउट द लिटरेसी रेट. चिल्ड्रन लिटरेसी रेट, कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, how many students are doing the studies properly. Here we are talking of the literacy rate. 2017-18 में हरियाणा में it was 82%, केरला में 94% and बिहार में 62. So now you can see that literacy rate is not very satisfactory in Bihar. Again we find Kerala leading this chart. 94% literacy rate, सब पढ़े लिखे हैं. This shows and this proves that the maximum population is educated, dear students. Very good. Kerala is an example for the other parts of the country कि आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं that everybody is getting so educated. The kind of model that they are following for the educational purpose, we have to learn from that. Now what we are understanding is the net attendance ratio. Net attendance ratio per 100 persons में सेकेंडरी स्टेज में वी हैव 14 and 15 years के जो लोग हैं, that is what is calculated for net attendance ratio. This is the ratio in 2017-18. Check out the data. Haryana में it is 61%, Kerala में 83 and बिहार में the lowest. We need to understand, देखो यहाँ पे what we need to be very sure about and what we need to understand is why is this condition prevailing in Bihar. बिहार में why this is always so कि in all the matters we are finding a very low graded percentage. infant mortality सबसे ज़्यादा, literacy rate सबसे कम, attendance ratio, the children are not going to the schools, alarming, not good for the state as well as for the development of the country. Both the things are getting hampered. So what we are understanding is, or देखो, please understand, this can be also asked the question that from where are we getting this authentic sources. Economic Survey 2018-19 पर पेज देखो कहाँ से, किस पेज से लिया है. NSSO रिपोर्ट नंबर 585, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमको ये सारे डेटा मिले हैं. दिस इज नॉट अ डेटा दैट इज टू बी शेयर्ड एवरीवेयर, but then look at the data collection of the NCERT, the way they have written these books. So some of the explanations are very clearly mentioned here. IMR, infant mortality rate. इसमें क्या है? These explanations are again important, dear students. Number of children that die before the age of 1 year. 1000 live children born in that particular year. How many children are dying before the age of 1 year? So this is what is giving us the data. IMR, literacy rate जो है, it is measuring the proportion of literate population. कितने educated हैं. Okay, infant mortality rate is number of children that die before the age of 1 year, and you have to remember these explanations.
ये explanations जो हैं, this is important children. Literacy rate is measuring the literate population, and इसमें what is important is that you need to be clear about the age. Net attendance ratio, NAR, is the total number of children of age group 14 to 15 years. Okay. Now, please see the table is showing that Kerala may, out of 1000 children, 10 died before completing 1 year of age. ठीक है, 10 ही बच्चे मर रहे हैं. इन हरियाणा क्या है, proportion of children dying within 1 year is 30. अब इसमें क्या है, which is 2 times more than that of Kerala, से दोगुने बच्चे जो हैं वहाँ पे they are losing their lives. On the other hand, per capita income of Haryana, it is more than Kerala. Table 1.3 when we are seeing. तो अब just consider a very emotional statement has been mentioned here in the book, that think that how dear you are to your parents. Think how everyone is so happy when a child is born. कोई बच्चा अगर अगर पैदा हो रहा है, how everybody is happy. So we are trying to think of parents जिनके children जो हैं who die before they even celebrate their first birthday. फर्स्ट बर्थडे के पहले ही अगर बच्चे का देहांत हो रहा है, इट इज़ अ वेरी सॉरी स्टेट माय डियर स्टूडेंट्स. इट इज़ वेरी पेनफुल ऑल्सो फॉर दीज पेरेंट्स. नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द ईयर इन विच दिस डेटा इज गिवन. इट इज़ 2017-18. 2017-18 का डेटा है, तो बहुत पुरानी बात नहीं है. दिस इज नॉट अ वेरी ओल्ड थिंग. 70 years after independence, our metro cities full of high-rise buildings, shopping malls, all these facilities are available in abundance. लेकिन child mortality rate is very high. Not a good sign. Okay. Problem यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही है with infant mortality rate. 1.4 में हमको दिख रहा है कि half of the children who are aged 14 to 15 in Bihar, half of the children attending the school in Bihar is beyond class 8, 14, 15, beyond class 8. They are not attending the school. इसका मतलब है if we are going to the school, Bihar, nearly half of the elementary class, means classes 6 to 8 के जो बच्चे हैं, they would be missing. Those who could not go to the school or are not there. तो ये if this had happened अपने साथ अगर ऐसा हो तो कितनी it is a very sorry state. It's not a thing that is to be felt proud of. So what are we doing? Money in our pocket is not buying all the goods and services जो कि we need to live well. So income, ठीक है, income is itself not a completely adequate indicator of material goods and services. खाली income नहीं है, we buy money cannot buy us many other things. Can we buy pollution free environment from money? No, dear students. Okay, we get unadulterated medicines. दवाइयाँ जो मिल रही हैं, क्या वो perfect medicines हैं? So unless we can afford to shift to एक ऐसी community में हम shift कर रहे हैं that already has all these things, ये सारी चीज़ें जिस community के पास हैं, तो money क्या है? It may also not be able to protect us from infectious diseases. ठीक है, बीमारियों से हम अपने आप को नहीं बचा सकते हैं. द होल ऑफ आवर कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप्स. बचने का उपाय तो पूरी कम्युनिटी को ही सोचना पड़ेगा. तो मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, द बेस्ट वे इज ऑल्सो द चीपेस्ट वे. सबसे अच्छा तरीका जो है वो सबसे सस्ता वाला तरीका है. तो मेनी इंपॉर्टेंट क्या है कि the goods and services are provided collectively. Collectively, these goods and services are provided. We have to think कि अगर is it cheap to have collective security? Whole locality के लिए देखो, security is also one of the very prominent things. ठीक है, every house needs security to have its own security staff.
अब सपोज इफ नो वन अदर देन यू आर देयर इन योर विलेज और लोकेलिटी इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग, ठीक है, खाली आप पढ़ना चाह रहे हो, बाकी कोई नहीं पढ़ना चाह रहा है, सो नॉट अनलेस पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड टू सेंड यू, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि प्राइवेट स्कूल में वो आपको भेज पाएं, सो यू आर एक्चुअली एबल टू स्टडी, आप पढ़ाई इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज मेनी अदर चिल्ड्रन ऑल्सो वॉन्ट टू स्टडी, बाकी के बच्चे भी पढ़ना चाह रहे हैं, एंड दे बिलीव दैट गवर्नमेंट शुड ओपन स्कूल्स, प्रोवाइड फैसिलिटीज, so that all children have a fair chance to study. सारे बच्चों को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए. आज भी क्या है, many areas children, particularly girls, they are not able to go to high school. हाई स्कूल जो है वो जा नहीं पाती हैं, एंड सोसाइटी हैज़ नॉट प्रोवाइडेड एडिक्वेट फैसिलिटीज़, पूरी सुविधाएं जो है वो सोसाइटी ने नहीं दिया है इन बच्चियों को. अब देखिए केरला में क्या है, द लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इतना कम, वी वे डिस्कसिंग जस्ट नाउ वी सॉ द डेटा, कैसे इतना कम है, बिकॉज इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज. हेल्थ फैसिलिटीज एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज आर इन अबंडेंस. इन द सेम वे सम स्टेट्स क्या है, PDS is functioning very well, public distribution system, and health is there, nutritional status of people is likely to be better. खाने पीने की व्यवस्था इन states में अच्छे से की गई है, so the nutritional levels are better. Now children, this is extremely important passage because lot of MCQs can come from this. आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए जाएंगे फॉलोड बाय ऑप्शंस. लिटरेसी रेट दैट इज देयर फॉर रूरल पॉपुलेशन, गांव के लोगों के लिए मेल की पॉपुलेशन, मेल का लिटरेसी रेट क्या है, फीमेल लिटरेसी रेट व्हाट इज देयर, एंड रूरल चिल्ड्रन हु आर देयर इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 14 years में 90% is male, 87% is female, and the percentage of rural children 10 to 14 years attending school is मेल इज 85%, फीमेल इज 82%. गॉट इट. तो आपका ये जो परसेंटेज है, दिस परसेंटेज दैट इज मैंशनड हियर, एज पर द परसेंटेज मैंशनड देयर आर सर्टेन फिल इन द ब्लैंक्स दैट यू नीड टू कंप्लीट. लिटरेसी रेट फॉर ऑल द एज ग्रुप्स, यंग इज देयर, ओल्ड इज देयर, इट इज फॉर रूरल मेल्स के लिए कितना है, जस्ट चेक आउट फॉर द रूरल पॉपुलेशन, इट इज 76%. And 54% for rural females. Lekin it is not just that these many adults could not attend school, but there are dash who are currently not in school. 76% and 54% are there not attending schools. में आप देखिए percentage of rural children age 10 to 14 attending school, मेल में 85% है, फीमेल में इट इज़ 82%, सो 15% इस साइड और 18% दैट साइड, 15 and 18 इट इज़ अराउंड 35%. गॉट इट. तो आप देख लीजिए, आर करेंटली नॉट इन द स्कूल. आपको इसमें यू हैव टू बी वेरी परफेक्टली कैलकुलेटिंग द डेटास. थोड़ा सा भी डेटा अगर ऊपर नीचे हुआ तो इट इज़ नॉट गुड, अच्छा नहीं होगा. आपको डेटा कैलकुलेशंस यू हैव टू कीप इट अपडेटेड. नाउ जब व्हेन वी आर सीइंग दिस टेबल दैट दिस मेनी परसेंट ऑफ रूरल गर्ल्स एंड परसेंट ऑफ रूरल बॉयज are not attending this school, they are not attending this school, the percentage of boys is 15%, percentage of girls is 18% are not attending school. So literacy among children 10 to 14 year is as high as 85% for rural, 82% for rural females and 85% for no, the literacy rate मेल का 90% है, रूरल 10 to 14 is as high as 90% and female 84% and for 90% for the rural males. तो high level of literacy is there among dash age group. किस age group में high literacy rate is there?
amongst the, of course, the male members, high literacy rate is there. काफ़ी ये पढ़े लिखे हमको दिख रहे हैं. They are quite educated people. Now when we see this, children, please understand how to calculate the BMI. For your 1 mark questions, this can be a frequently asked question. How do we calculate body mass index, BMI? बहुत easy है. It is easy to calculate. Every student student has to find out her weight and height. इसके बाद each student's weight is taken in kilograms and height is taken. एक scale बनाना है on the wall, and measurement is there accurately with the head straight. Just see how the height is being measured. तो ये height को, ये जो height is first recorded, after that it is changed into centimeter, and we are dividing the weight in kg by the square of the height. Number we get is as dividing the weight by square of the height, we are getting the BMI. अब BMI देखिए आगे हम लोगों को, ये BMI जो है we calculate it. Pages 90-91 में we will be seeing the BMI of the children, students BMI. ठीक है, it could be within the normal range. Normal range में ही BMI है, body mass index. Less than that, एक criteria is there for calculating the body mass index. उससे below अगर बच्चे का weight है, height है, तो that is not a perfect BMI. सही नहीं है वो तरीका. And she is undernourished, the child is undernourished. उसी तरह से BMI है किसी boy का, aged 15 years and 6 months is 28, then he is overweight. BMI किस तरह से calculate करते हैं? तो life situations are there how the BMI fluctuates. कुछ बच्चे underweight हैं, कुछ बच्चे overweight हैं. What are the criteria which is giving us this report? So BMI का calculation देख लीजिएगा. अब देखते हैं Human Development Report, HDR. एक बारी we have to realize कि even though the level of income तो level of income is important, फिर भी it is an adequate measure of the level of development. We begin to think of other criterion. बाकी के criteria के बारे में सोचना भी बहुत ज़रूरी है. There could be long list of criterion, लेकिन then it would be not so useful. इतना useful नहीं है. अभी हमको सबसे ज़्यादा क्या समझने की ज़रूरत है? That small number, what we need is a small number of the most important things. Health and education, अभी तक whatever we have calculated for the human development, we have health and education. जैसे कि केरला and हरियाणा is there. Past decades में क्या हुआ है? Health and education have come to be used along with income. अब क्या है? More importance is given to health and education. When we are seeing this HDR, Human Development Report जब देख रहे हैं past decades में health and education indicators, when we are seeing, we are using along with income as a measure of development. अब ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आ रही है. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आ रही है, कहाँ से आ रही है? वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? इट इज़ कमिंग फ्रॉम, इट इज़ रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP, विच इज़ कंपेयरिंग द कंट्रीज. कंट्रीज का भी तो डेवलपमेंट हमको देखना है. वी कैन नॉट ओनली कंसिडर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल कंट्री. इंडिविजुअल अपनी कंट्री के अंदर का डेवलपमेंट तो देखना ही है. बाहर की कंट्रीज में डेवलपमेंट का क्या क्राइटेरिया है? व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट इन द आउटसाइड कंट्रीज? वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो. तो सर्टेन रेलिवेंट डेटाज आर हियर. रिपोर्ट 2020 का रिपोर्ट है. वेरी लेटेस्ट रिपोर्ट्स आर हियर, and according to this report we are seeing India is standing at second. श्रीलंका से नीचे है इंडिया. श्रीलंका is doing better. Life expectancy at birth we can see 69.7. Years of schooling of people aged 25 and above 6.5%.
And HDI rank in the world, India is at 130th position, Sri Lanka is at 73rd position, dear students. तो श्रीलंका हमारे से छोटा कंट्री है, बट इट्स कंडीशन इज स्टिल बेटर. उसकी कंडीशन अभी भी सही है, श्रीलंका की कंडीशन. दिस इज व्हाट इज टू बी अंडरस्टूड, कि श्रीलंका छोटी कंट्री होते हुए भी दे आर हैविंग अ प्रॉपर कंट्रोल of all the affairs that are happening in their country. So we need to take a good idea of this, and this data is there, this report is there. We'll be discussing it in the next class. Till then, children, thank you so much and all the best to you.